पूछा है अव्यक्त वाणी में, अपनी अव्यक्त स्टेज फरिश्ताई स्टेज कब बनावेंगे? It has been asked in an Avyakt Vani, when will you reach the Avyakt stage, the angelic stage? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? Will you call the Chief Justice for it? तो चीफ जस्टिस धर्मराज आ जाएगा। Then, when the Chief Justice, that is Dharmraj, comes, तो धराधर अव्यक्त स्टेज बनने लग पड़ेगी। everyone will start reaching the Avyakt stage quickly. अव्यक्त स्थिति माना जो आंखों से स्थिति नहीं देखी जाती है। Avyakt stage refers to the stage which can't be seen through the eyes. आंखों से नहीं देखने में आता है कि ये क्या याद कर रहा है। No one can see through the eyes as to what this one is remembering. अव्यक्त माने माने नहीं, व्यक्त माना देखने योग्य। Avyakt means means not, and Vyakt means capable of being seen. अव्यक्त और व्यक्त माना देखने योग्य, जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो है व्यक्त। That is Avyakt, and Vyakt means capable of being seen. Something that is visible through these eyes is Vyakt. जैसे शरीर दिखाई पड़ता है, For example, the body. It is visible. शरीर की कर्मेंद्रियों से कोई काम किया जाता है वो तो दिखाई पड़ता है। The actions performed through the karmendriya of the body are visible. तो उसे कहेंगे व्यक्त। So they will be called Vyakt. और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो स्टेज है अव्यक्त। And something that isn't visible through these eyes, that stage is Avyakt. आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, The soul isn't visible, लेकिन आत्मिक स्टेज अनुभव की जाती है। but the soul conscious stage can be experienced. What main powers do you have to assimilate within for becoming Avyakt? There are certainly many powers, but mainly, you need the power to tolerate, the power to discriminate, the power to shorten the expansion, and also the power to make something small into big. You need the power to pack up, the power to assimilate, the power to face, and the power to judge. Along with all these powers, you also need the power to make everyone loving and cooperative, meaning the power to unite everyone. Avyakt Vani 27th July 1970, page 294, end. The experience of Avyakt stage is powerful. All thoughts are accomplished by the Avyakt stage. There is less effort and more attainment in it. Avyakt Vani 7th June 1970, page 263, middle. आत्मिक स्थिति ही अव्यक्त स्टेज है। The soul conscious stage itself is the Avyakt stage. देह की याद व्यक्त स्टेज है। The remembrance of the body is a Avyakt stage. व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, Vyakt means something that is visible to the eyes. और अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई न दे। And Avyakt means something that isn't visible to these eyes. उस अव्यक्त में दो तरह की स्टेजेस हैं। एक है मनन चिंतन मंथन की स्टेज। There are two kinds of Avyakt stages. One is the stage of thinking and churning. ज्ञान की स्टेज, The stage of knowledge. या नई दुनिया की स्टेज, The stage of the new world. या नई दुनिया की प्लानिंग की स्टेज, Or the stage of the planning of the new world. वो है आकारी स्टेज। That is the subtle stage. और इससे भी ऊपर एक और स्टेज है जहाँ सिर्फ बिंदु। And there is another stage even above it, where there is only the point. निराकारी स्टेज। That is the incorporeal stage. तो एक सेकंड में निराकारी हो जाओ, So, become incorporeal in a second,
एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन में चले जाओ, Start thinking and churning in a second, और एक सेकंड में जब चाहो तब कर्मेंद्रियों के कर्म करने की स्टेज में आ जाओ। and come in the stage of performing actions through the karmendriya whenever you wish in a second. ये 3 अवस्थाएं बताई अव्यक्त वाणी में। These 3 stages have been mentioned in the Avyakt Vani. ये प्रैक्टिस घड़ी घड़ी करना है। You have to practice them every moment. अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। Corporeal this moment, subtle the next moment, incorporeal the next moment. You just need the power to control waste thoughts. Because of having waste thoughts, those thoughts get mixed with the original inspiration or the pure response that you receive from Bap Dada, for waste thoughts are many. If you have the power to control the waste thoughts, you see that very response clearly. In the same way, if your intellect is translated, the response of every concept becomes clear and accurate in it. There isn't any mixture. Those who don't have waste thoughts, they can increase their Avyakt stage more. You should also have pure thoughts. Avyakt Vani 23rd January 1970, page 175, beginning. वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। At the present time, the concentration of the mind will help you experience the constant stage, ekrasthiti. कराएगी। It will. अभी ऐसी मन की एकाग्रता ब्राह्मणों की दिखाई नहीं देती है जो एक रस स्थिति का अनुभव कराए। Now, such concentration of the mind of the Brahmins, which would help them experience the constant stage, isn't visible. लेकिन कराएगी। But it will help them experience it. अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो। Now, it was seen in the result that you want to focus your mind. क्या? What? मन को क्या करना चाहते हो? What do you want to do to the mind? इच्छा तो है कि ये मन रूपी अम्मा एक के आगे टिक जाए। You certainly wish that this mind in the form of the mother becomes stable in front of the one. एकाग्र हो जाए। It should become focused, ekagra. हिले डुले नहीं। It shouldn't shake or quake. एकाग्र तो करना चाहते हो लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। You do want to focus it, but it digresses in between. एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। The power of concentration will help you experience the Avyakt angelic stage easily. मन जब एकाग्र हो जाएगा When the mind becomes focused, तो रिजल्ट क्या होगा? what will be the result? हैं? जो फर्श की दुनिया वाले हैं उनसे रिश्ता टूट जाएगा। Your relationship with those living on earth will break. और किससे रिश्ता टूट जाएगा? And with whom will it be formed? जो अर्श की दुनिया वाला है इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, उसके प्रति एकाग्रता हो जाएगी। The one who resides in the sky, the one who has come to this world and is transforming it, you will become focused on him. मन अभी भटकता है, The mind digresses now. चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, और चाहे व्यर्थ के व्यवहार में। Either in wasteful talks, wasteful thoughts, or wasteful behavior. जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होके बैठने की आदत नहीं होती है।
For example, some don't even have the habit of sitting steady through the body. क्या? What? शरीर भी एकाग्र कब होता है? When does even the body become steady? मन की एकाग्रता हो जाएगी तो शरीर भी एकाग्र होगा। When the mind becomes focused, the body will also become steady. तो कोई कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है। So, some don't have the habit of sitting steady. माना साबित हुआ कि उनका मन तो चंचल है ही है। It means that it proves their mind is no doubt fickle. और कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत होती है। And some have the habit of sitting steady. तो ऐसे ही तन के अभ्यास के आधार पर ही मन को भी समझ लेना चाहिए। So similarly, on the basis of the habit of the body, you should understand the state of your mind as well. जैसे वो आसन प्राणायाम लगाने वाले आसन प्राणायाम लगाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। Just like those who practice asana pranayam and teach it to others, तो वो भी रेगुलरिटी की बात बताते हैं कि रेगुलर अगर आसन करेंगे, नित्य प्रति पद्मासन पर बैठेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। they speak about regularity. If you practice it regularly, if you sit in Padmasana, that is the lotus posture every day, your body will become stable. तो ऐसे ही मन के लिए भी लागू होता है। So, the same is applicable for the mind as well. Now day by day, you will see as if you experience this in practice, that Bab Dada has come today. He came face to face and held your hand. You will see this with your eyes, not just with your intellect. You will feel it. However, you should only make the lesson of one father and no one else firm for this. Then, just as your shadow follows you, similarly, Bab Dada can't be out of your sight. Avyakt Vani 29th March 1981, page 107, end. अव्यक्त मिलन का मतलब ये है कि आत्मा ऐसी स्टेज को पकड़ ले कि जब चाहे तब इतनी गहरी अनुभूति में चली जाए कि जैसे हमको साकार में मेल हो रहा है। Avyakt meeting means the soul should reach such stage where it has such a profound experience that it should feel it is having a corporeal meeting. जैसे व्यक्त में होते हैं, देवभान में होते हैं, तो खींच होती है बाबा हमें साकार में मिले। Just like when you are corporeal, when you are body conscious, you feel a pull. I should meet Baba in the corporeal form. साकार में नहीं मिलता है तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन जो अव्यक्त स्टेज होगी उसको आंसू बहाने की स्टेज नहीं होगी, वो तो प्रसन्नता में रहेगा, हल्कापन में रहेगा। If you don't, you cry, you shed tears. On the contrary, the one in an avyakt stage won't be in the stage of shedding tears. He will be joyful, he will feel light. जब आप कहते हैं कि बाबा जिनके साथ रहते हैं, तो आपका ध्यान बाबा की आत्मा के ऊपर केंद्रित है या बाबा के शरीर के ऊपर केंद्रित है? When you say those with whom Baba stays, is your attention focused on Baba's soul or on Baba's body? अगर आत्मा के ऊपर तो आत्मा आपके साथ होगी। Student, the soul. If it is focused on the soul, his soul will be with you. आपके साथ नहीं रह सकती है सदा। Can't he be with you forever? वो सुप्रीम सोल बाप को आप जितना याद करते हैं, साकार में निराकार को जितना याद करते हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बंधा हुआ नहीं है आपके साथ रहने के लिए। The extent to which you remember that Supreme Soul Father
The extent to which you remember the incorporeal one in the corporeal one, doesn't he stay with you? Isn't he bound to stay with you to that extent? आप फिर ऐसे क्यों कहते हैं? Student, he is. Then why do you say so? हैं? परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, पेपर क्यों आते हैं? हैं, पेपर के लिए पूछ रहे हैं कि इसलिए परिस्थिति क्यों आती है. इसीलिए ना. Another student. Baba, she is asking, why do such exams, such circumstances arise? That's the very reason, isn't it? कि ध्यान कहाँ केंद्रित है? Where is your attention focused? माया चोटी से पकड़ती क्यों बोलते. इसीलिए पकड़ती है कि हम जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि से तिरक रहा है. Student, why does Maya catch hold of us? She catches hold of you because the one who we want to be with, he is slipping out of our intellect. राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे. The devotees of Ram, the followers of Rahim, are all blind. राम और कृष्ण के अंदर जो सुप्रीम सोल है उसको वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भूल गए. Even the so-called Brahma Kumar Kumaris have forgotten the Supreme Soul in Ram and Krishna. क्या याद रह गया? What do they remember? वो शरीरधारी याद रह गया. शरीर हमारे साथ है. They remember the bodily being. The body is with us. अभी भी रंगमंच पर स्टेज पर जब सोल प्रवेश होती है तो चिपक के बैठते हैं हमारे साथ. Even now, when he is, meaning Brahma Baba's soul, enters her, meaning Dadi Gulzar, on the stage, they stick to him. He is with us. अरे वो देहधारी तुम्हारे साथ होने से परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी क्या? Are, will you overcome the circumstances if the bodily being is with you? बुद्धि में जिनके सदैव बैठा हुआ है कि एक शिव बाबा ही हमारा कल्याणकारी है. Those who always have it in their intellect, only one Shiv Baba is beneficial for us. और देह जिस देह में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है And as for the body he enters permanently. वो अंत तक किसी के साथ साकार में रहेगा क्या? Will he be with anyone till the end physically? है? नहीं रहेगा. He won't. फिर भी अपने पुरुषार्थ से अपने को अव्यक्त स्टेज में स्थिर करना पड़े. Still, you have to make yourself stable in the Avyakt stage through your purushaarth. जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे उनको अनुभव होगा कि बाबा सदैव हमारे साथ साकार में है. Those who practice it, they will feel Baba is always with us physically. उसका चित्र भी दिखाया है. Its picture has also been illustrated. सदैव साकार में साथ है इसका कौन सा चित्र दिखाया है? Which picture has been shown illustrating his everlasting corporeal presence? अपना चित्र ही भूल गए Have you forgotten your own picture? हैं? सदैव साकार में साथ है उसका एक खास चित्र दिखाया हुआ है भक्ति मार्ग में. In the path of bhakti, there is a special picture illustrating that he is always present with you physically. लक्ष्मी नारायण. नहीं है? नहीं वो तो दो का ही हुआ. Student Lakshmi Narayan. No. Student Ardhanarishwar. No. That's just of two souls. शंकर. रासलीला कौन ने बोला? हाथ उठाओ. Student Rasliila. Rasliila is Krishna's round dance with the herd girls. Who said it? Raise your hand. हाँ देखा बढ़िया इंचार्ज टीचर मिली हुई है आप लोगों को. Yes. Look, you people have got a very good in charge teacher. रासलीला रासलीला में हर गोप गोपी के साथ कौन दिखाया गया है? Rasliila. In Rasliila, who is shown with every gop-gopi?
कृष्ण को दिखाया गया। उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दिया क्योंकि कृष्ण को भगवान समझते हैं। They have shown Krishna because they consider Krishna to be God. है कौन साथ में? शिव। Who is actually present with them? शिव बाबा। Shivbaba. सदैव साथ में अनुभव होगा, सोते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है। You will always feel His presence. You will feel His presence while sleeping. जागते समय भी अनुभव होगा हमारे साथ है। You will feel His presence while waking up. चलते फिरते उठते बैठते कोई भी कर्म करते समय क्या अनुभव होगा? While walking, moving, standing, sitting, while performing every action, what will you feel? बाबा हमारे साथ। Baba is with me. ऐसी अव्यक्त स्टेज बन जाए। You should reach such an Avyakt stage. फिर ये प्रश्न रहेगा कि बाबा जिनके साथ रहते हैं उनको काहे के लिए परेशानी आती है? Then will this question arise? Why do those with whom Baba stays feel troubled? फिर तो दुनिया ही पूरी बाबा, दुनिया तो दुखी देने वाली है। नहीं, दुनिया दुख देने वाली भले है, लेकिन हमारे साथ कौन है? Student, the world will certainly give sorrow. Though the world is sorrow giving, who is with us? बाबा हमारे साथ। हमारे साथ तो सुखदाता बाप हमारे साथ है ना। Student, Baba is with us. The joy giving Father is with us, isn't he? जब सदैव हमारे साथ है तो दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं यही बात। When he is always with us, there can't be the name or trace of sorrow. And Baba also says the same. हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए। When you are the children of Heavenly God the Father, you should be in heaven. फिर नरक में क्यों पड़े? Why are you lying in hell? इसका मतलब It means, है, इसका क्या मतलब हुआ? what does it mean? कि हेवनली गॉड फादर के बच्चे अभी पक्के नहीं होते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बने नहीं हैं, देहवान में रहते हैं। You haven't become the firm children of Heavenly God the Father, the spiritual children of the spiritual Father yet. You stay body conscious. बाप तो शुरुआत से ही कह रहा है अव्यक्त बनो सदा काल अपने साथ रखो बाबा को। The Father has been saying from the beginning itself, become Avyakt, always keep Baba with you. गुप्त क्यों करते हो? Why do you make him hidden? बाबा सदैव हमें अपने साथ महसूस होना चाहिए या गुप्त महसूस होना चाहिए? Should we always feel Baba's presence or should we feel that he is hidden? सदैव साथ ऐसी स्टेज कब बनाएंगे? You should always feel his presence. When will you reach such a stage? वो अव्यक्त होने वाली बात ही खत्म हो गई अब। Now the very concept of being Avyakt is lost. सदैव अपने साथ ही रहे बाबा। Baba should always be with you. बाबा हमसे दूर होने नहीं पाए। He shouldn't leave you at all. रात में सोए तो भी साथ हमारे बाबा। Baba should be with you even when you sleep at night. दिन में जगह तो भी हमारे साथ बाबा चले। Baba should be with you even when you are awake during the day. ऐसी स्टेज बनाने के लिए नहीं बोला? Hasn't he told you to attain such a stage? आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी चीज ये आ जाएगी, ये शरीर भूल जाएगा। If your concentration is on the soul, you will gradually reach such a stage that you will forget the body. और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। And you will become capable of only seeing the soul. आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। The soul will become a soul. The attachment for the body will be broken. तो सदा काल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए, ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है। So now you have to make such purushaarth that the attachment for the body is broken permanently. नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है,
Otherwise, it has been so many years since Baba has been saying, children, you have to become Avyakt. लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। But you haven't been able to become Avyakt even now. अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है। As you haven't been able to become Avyakt, you wish to see the corporeal one in person. सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। You wish to speak to him in person. अगर अव्यक्त बन जाए तो सदा काल का साथी हो जाए। If you become Avyakt, he will become your everlasting companion. यहाँ तक बोल दिया मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। It has been said to this extent. The residents of Madhuban will have to leave Madhuban. गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। The residents of Gita Pathshalas will have to leave Gita Pathshalas. और जो तुम्हारा ज्ञान सरोवर है And your Gyan Sarovar, किसका है? whose is it? एडवांस वालों का है या बेसिक वालों का है? Those of the advanced knowledge or those of the basic knowledge? एडवांस वालों का चैतन्य है या जड़ है? Is the Gyan Sarovar of those of the advanced knowledge living or non-living? चैतन्य ज्ञान सरोवर है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। Students living. You will have to leave even the living Gyan Sarovar. यहाँ तक बोल दिया। It has been said to this extent. कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा। That there will be no support, no destination. भले छोड़ना पड़ेगा साकार में, लेकिन दिल से बाबा नहीं जाना चाहिए। Though you will have to leave it physically, Baba shouldn't leave your heart. साधन मिले या न मिले, Whether you have the means or not, लेकिन दिल में बाबा समाया रहे। Baba should be set in your heart. You have to stay in the Avyakt stage while staying in the Vyakt physical form. When you stabilize in the Avyakt stage, there won't be any confusion in that stage. Avyakt Vani 21st January 1969, page 19, beginning. जो अव्यक्त बच्चे होते हैं, अव्यक्त स्टेज बनाने वाले, उनके साथ संपर्क रहता है, संबंध बना रहता है। The Avyakt children, that is those who make their stage Avyakt, he has a contact with them. He maintains a relationship with them. बुद्धियोग जुटा रहता है। There is a connection through the intellect. और जो इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं। अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों की संभाल में लगे हुए। And those who don't become Avyakt at all, despite Baba saying, become Avyakt for so many years, those who are engaged in their very expanse of worldly affairs, who are engaged only in the corporeal world, who are engaged in taking care of their children, तो फिर बाबा कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा बनने का है। Baba says, this very knowledge is of becoming Nashto Moha Smriti Labdha. नष्ट मोहा बनेंगे सो Those who become Nashto Moha will make attainments. भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे। They will experience themselves to be close to God. क्या आगे चल के जब तुम बच्चे संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे, In future, when you children attain the perfect stage, तो निराकारी स्टेज, अव्यक्त स्टेज ऐसी हो जाएगी the incorporeal stage, the Avyakt stage will become such that जैसे अभी घड़ी घड़ी साकारी स्टेज में उतर आते हो। just as you come in the corporeal stage again and again,
देवभान में उतर आते you हो, become body conscious. उस समय तुम्हें ऐसा भासेगा कि हम सदैव निराकारी स्टेज में बने रहें। At that time, you will feel that you should always be stable in the incorporeal stage. उस स्टेज से नीचे उतरते ही तलखीलापन महसूस होगा। You will feel restless as soon as you descend from that stage. अच्छा नहीं लगेगा, You won't feel good. बार बार उसी स्टेज में जाने की इच्छा होगी। You will want to go back to that stage again and again. There is sound in this world. There isn't any sound in the Avyakt world. This is why the Father is teaching the drill to take all the children beyond sound. You have to make sound in a second and go beyond it in the next second. It is very necessary to make such practice at the present time. That time will also come. The more you stabilize in the Avyakt stage, the more you will come to know the feeling of someone's mind just by the indications of his eyes. You won't need to speak or listen to someone. Such time is going to come now. Just like when you go to Bab Dada, he understands your thoughts, the feelings of your mind without your telling him. Similarly, you children also have to study this last course. Just like there is the language of the mouth, similarly, there is the chit-chat of souls. It is called spiritual chit-chat. So, the souls also talk to souls, but how? Why? Do the souls talk with the mouth? The more you stabilize in the spiritual stage, the easier and clearer you will know the words of every soul. For example, in this world, you know the feelings of one another when they describe it with their mouth. So, which dharana is required for this? The thing especially required is that the line of the intellect should always be clear. If there is any disturbance in your intellect or mind, or if the line isn't clear, you won't be able to know the thoughts and feelings of one another. The clearer the line of the intellect, that is the line of purushaarth is, the more what will be in your memory. The future of anything will be as clear as the present to them. The present and future will be alike for them. Avyakt Vani 22nd January 1970. हाँ, याद में रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे, तो गहरी आत्म की स्थिति में रहने से आवाज कम हो जाएगी। Yes, if you stay in remembrance in the soul conscious stage, your voice will become soft by being in a deep soul conscious stage. देवभान में आने से ही आवाज निकलती है। It is because of being body conscious that there is sound. देह से ही आवाज निकलती है। It is the body that produces sound. देह नहीं तो आवाज भी नहीं। If there is no body, there is no sound either. The more you stabilize in the Avyakt stage, the more you will perform such actions through the Karmendriya, that they will be as per the direction of Srimad. The children will experience this. Now, you have to perform such actions through your Avyakt stage, like you have been performing every action according to Srimad. Avyakt Vani 23rd January 1969, page 18, beginning. लेकिन जब हम स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएं, तो सारे कार्य बाप दादा हमसे कराते हैं, हमें सोचने की दरकार नहीं रहती है। But when we stabilize in the soul conscious stage, in the Avyakt stage, Baba has all the work done through us. We needn't think about anything. तो ये है ज्ञान को सार में समाना और ज्ञान को विस्तार में ले जाना। So, this is bringing knowledge to an essence and taking it to an expanse. विस्तार में ले जाने से दुनिया का कल्याण होगा। By taking it to an expanse, the world will be benefited. जितना हम दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे,
तो दुनिया वालों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? The more we stay engaged in the service of others, will the effect of the worldly people affect us or not? पड़ेगा। It will. तो हमारी शक्ति क्षीण होती है। So, our power diminishes. फिर जितना हम आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, Then, the more we stabilize in the soul conscious stage, उस आत्मिक स्टेज में स्थिर होना माना सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की एकाग्रता हो जाना। to stabilize in the soul conscious stage means to centralize all the arms and weapons of knowledge. सारा कारोबार बाप दादा खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। Bap Dada takes up all the responsibility in his hands. The children having yog will feel that Baba is talking to them now. The children with the Avyakt form can experience it. I also remember the special children at a special time. Avyakt Vani, 18th January 1969, page 5, beginning. अव्यक्त रहने की बात बाबा ने बोली या नहीं बोली? Has Baba mentioned about being Avyakt or not? अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाप तुम्हारे साथ सदा रहेगा या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा? If you become practiced in being Avyakt, will the Father always be with you, or will he be with you sometimes and sometimes he won't? सदा He will रहेगा। always be with you. अव्यक्त बनो, Become Avyakt. अर्थात इस व्यक्त देह की इंद्रियों, व्यक्त देह के पदार्थों को भूल जाओ। That is, forget this physical body, the physical indriya of the body, and the physical things related to the body. इस व्यक्त दुनिया को भूल जाओ। Forget this physical world. सिर्फ बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम याद रहे। Just remember the abode of joy and the abode of peace in the intellect. आत्मिक स्टेज बनी रहे। Just be in the soul conscious stage. जब लगातार ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम बाप से डायरेक्ट सीखेंगे। When you are in such stage continuously, you will learn from the Father directly. हर बात का जवाब अंदर ही अंदर मिलेगा। You will receive the answer to every question within. बाबा अव्यक्त मिलन में अभी कभी पास नहीं हुए, फेल ही होते हैं। Student: Baba, I have never passed in having an Avyakt meeting. I always fail. अव्यक्त मिलन के लिए तो आत्मिक स्थिति चाहिए ना। To have an Avyakt meeting, the soul conscious stage is essential, isn't it? खुद ही आ जाती है बार बार। You become egotistic again and again. मैं खुद ही कर लूंगा, मैं कोई से सहयोग नहीं लूंगा। I will do it by myself. I won't take help from anyone. मैं बाप का भी सहयोग नहीं लेना चाहता। I don't want to take help from even the Father. बाप के परिवार का भी सहयोग नहीं लेना चाहता। I don't want to take the help from the Father's family either. कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे हैं उनसे सहयोग नहीं लेंगे। If you don't understand some point, won't you take the help from the elder children of the Father's family? बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे उनसे मदद लेंगे तो वो जिस तरह समझे होंगे तो उसी तरह से बताएंगे। Student: If I take the help from the elder children of the Father's family, they will explain it the way they would have understood it. अगर डायरेक्ट बाप से ही पूछेंगे जब तक बाप नहीं मिलता है तब तक उनकी बात सुन ले। If I directly ask the Father, Baba, no. Until you meet the Father, you should listen to them. जब बाप मिल जाए तो बाप से वेरीफाई कर ले। And when you meet the Father, verify it with him. आजकल तो इंफॉर्मेशन का दायरा खूब बढ़ रहा है। Nowadays, the range of information technology is increasing a lot, isn't it?
जल्दी तेजी से आगे बढ़ रही है। Information technology is advancing rapidly. किसके लिए बढ़ रही है? For whom is it advancing? ईमेल, मोबाइल, हाँ, तो बच्चों के लिए ये आगे बढ़ रही है। It is advancing for you children. इतना और कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। No other department is advancing as much. लेकिन अव्यक्त मिलन सीख लिया तो बस ये साधना ठंडी हो के लिए। जाएगी। Student, but once we learn to have Avyakt meeting, Baba, then it, meaning information technology, will become ineffectual. ये तब तक के लिए है जब तक आत्मा इतनी पावरफुल नहीं बनी है। It will be in use only as long as the soul hasn't become so powerful. टेलीपैथी, आत्मा की जो टेलीपैथी है वो इतनी पावरफुल नहीं हुई है। As long as the telepathy of the soul hasn't become so powerful. बल्कि बाबा ऐसा भी होगा, जो संकल्प हमारे अंदर आएगा, हमारे नजदीक वाली आत्मा के अंदर वो संकल्प तुरंत पहुंचेगा। Even this will happen. Whatever thought arises in our mind, the same thought will reach the soul near us immediately. कई बार होता है। जैसे अभी एक बात कह रही थी और तुरंत वहां से टेलीफोन आया, वही बात को कहने लगी। Just like it happened a moment ago. She was telling something and she received a phone call immediately from there, and she, the caller, started saying the same thing. बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात। Exactly the same thing. जितना जो अव्यक्त स्टेज में टिकेगा बाप को पकड़ेगा। The more someone stays stable in the Avyakt stage, he will catch hold of the Father to that extent. अव्यक्त स्टेज में स्थिर नहीं होगा तो बाप की पकड़ से दूर हो जाएगा। If he doesn't stay stable in the Avyakt stage, he will be far away from the grasp of the Father. माला से भी दूर हो जाएगा। He will go far away from the rosary too. जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा आत्माभिमानी बनने का, उनको फिर धर्मराज की सजाएं खा करके बाप के घर में जाना पड़ेगा। Those who wouldn't have made complete purushaarth of becoming soul conscious, they will have to suffer the punishments of Dharmraj and then go to the Father's home. तो कहेंगे काल खा गया। Then it will be said that death devoured them. सबसे बुद्धियों खींच करके किसे याद करो, सिर्फ Pull the connection of your intellect from everyone and remember just who? सिर्फ मेरे को याद करो। Remember me alone. कोई क्या हमसे नहीं होता, ये हमने बहुत करके देख लिया। Some say, I can't do it. I have tried it many times. नहीं होता है तो धर्मराज सजाएं खाओ, डंडे खा खा के सुधर जाए। If you aren't able to do it, you will have to suffer the punishments of Dharmraj. Receive beatings and reform. देवांग सारा जड़ जाएगा। All the body consciousness will be destroyed. या तो पुरुषार्थ करो, Either make purushaarth, या तो मरो पिटो। or receive beatings and die. करो या मरो। Do or die. मरना तो सबको है, Everyone has to die. कोई बचेगा क्या? Will anyone survive? बचेगा तो कोई नहीं। No one will survive. चाहे स्वेच्छा से पुरुषार्थ करो और चाहे तो कुटपिटी के पुरुषार्थ करो। Either make purushaarth willingly or receive beatings and make purushaarth. पॉइजन की दुनिया में तो अब रह नहीं सकते। You can no more live in the world of poison. ये पॉइजन की दुनिया तो अब भस्म होने वाली है। This world of poison is going to turn to ashes now. अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? If you don't make purushaarth, what will happen? धर्मराज के डंडे तो खाएंगे ही,
You will no doubt receive beatings from Dharmraj. लेकिन सतयुग त्रेता में पदवी नहीं मिलेगा. You won't receive a position in the golden and the silver age either. सुख भी नहीं मिलेगा. You won't receive happiness. जन्म भी नहीं मिलेगा. You won't receive a birth in heaven either. फिर वही बिच्छू टिंडन की दुनिया द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेते रहे. You will again keep being born in the world of scorpions and spiders in the copper and the iron age. When the time of the destruction of the world comes closer, the scene of the period of regret will be very tragic. Now, they are enjoying themselves for a short period, but at that time, they will have to wander around begging for the support of a second, the comfort of a second, the happiness and peace of a second, like a beggar begging for a single penny. They will have to regret by bowing their head lakhs and crores of times for each and every wrong action. They will stagger because of the burden of wrong actions and will have to experience mental pain, just like there is unnecessary bloodshed there. Similarly, there will be the play of the Brahmins, experiencing their wrong actions and shouting, "What we did was unnecessary. What we did was unnecessary." Avyakt message 13th August 1979. Those who are stable in the Avyakt stage, they have known, recognized the Avyakt personality. Those who didn't stay in the Avyakt stage, they didn't completely recognize the invaluable gem. Avyakt Vani 21st January 1969, page 20, middle. अभी तक उल्हना देते रहते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? You keep complaining even now. Why did Baba become Avyakt? कौन उल्हना देते हैं? Who complain? बीके उल्हना देते हैं या पीबी के उल्हना देते हैं? Do the BKs or the PBKs complain? अरे उल्हना देते रहते हैं. They keep complaining. तो बाप भी उल्हना देता है Then the father also complains. कि साकार में होते हुए भी बाप समान कब बनेंगे? In spite of being corporeal, when will you become equal to the father? ऐसे नहीं है कि बाप साकार में नहीं है. It isn't that the father doesn't have a corporeal form. साकार तो है, He is definitely corporeal. लेकिन अव्यक्त स्टेज नहीं पकड़ते, निराकारी स्टेज नहीं पकड़ते. But you don't reach the Avyakt stage. You don't reach the incorporeal stage. जो कि मुरली में ही इशारा दे दिया था. It was already hinted in the Murli. आत्मिक स्टेज में जो ठहरते जाएंगे, Those who go on stabilizing in the soul conscious stage, वो बाप दादा को पहचानते जाएंगे. they will keep recognizing Bap Dada. तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी. Only the Avyakt stage of you children will reveal the Father. इससे साबित होता है जो जितना अव्यक्त बनेगा, निराकारी स्टेज में टिकेगा, वो उतना ही चेहरे से और चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करेगा. It proves that the more someone becomes Avyakt, the more he stabilizes in the incorporeal stage, the more he will reveal the Father through his face and character. जो अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों की और बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब तुम अव्यक्त बनेंगे. It was said in the Avyakt Vani, you children and the Father will be revealed when you become Avyakt.
शीशे जैसे, ट्रांसलाइट जैसे बन जाएंगे। When you become like a mirror, like translight. ट्रांसलाइट के चित्र कितने क्लियर होते हैं। Translight pictures are so clear. ऐसे ही तुम्हारा भी जो साक्षात्कार करेगा, सामने आवेगा, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Similarly, the one who has your visions, who comes in front of you, you won't need to explain to him a lot. देखने मात्र से ही, साक्षात्कार मात्र से ही समझ जाएगा। Just by seeing you, by having visions, he will understand it.